में No stress. Keep it 10 to 12 minutes. नमस्ते। सायंकालीन सत्र में स्वागत है। सायंकालीन वंदना के लिए पूनम जी को आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू यू पूनम जी। थैंक यू। सायंकालीन वंदना, अर्पण एवं प्रारंभिक वंदना। योऽसो भगवा अरहन् सम्मा सम्बुद्धो स्वाक्षातो येन भगवता धम्मो सुपटिपन्नो यस्य भगवतो सावक संघो तन्मयं भगवन्तं सधम्मं ससंघं इमे हि सत्कारे यथा रहन्नारोपिते हि अभिपूजयाम साधुनो भन्ते भगवा शुचिर्परिनिब्बतोऽपि पश्चिमा जनतानुकम्पमानसा इमे सत्कारे दुगतपणाकारभूते पटिगणहातु अमहाकन्दीघरतन् हिताय सुखाय अरहन् सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्धानुसति प्रारंभिक वंदना। हन्दमयन् बुद्धस्य भगवतोपभागनं कारं करोमसे
नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा अन्धमयन् बुद्धानुसतिनयन् करोमसे तन्खोपन् भगवन्तन् एवं कल्याणो कितिसद्धो अभुक्तो इति पिसो भगवा अरहन् सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषदम्म सारथि सत्ता देव मनुस्सानन् बुद्धो भगवाति हन्दमयन् बुद्धाभिगितिन् करोमसे बुद्धवारहन्त वरदादिगुणा वियुक्तो शुद्धाभिज्ञान करुणा हि समागततो बोधेसियो सुजनन्तन् कमलन् वसुरो वन्दामहं तमरन् शिरसा जिनेन्दन् बुद्धो यो सबपाणिनन् शरणन् खेममुत्तमन् पठमानुसतिष्ठानन् वन्दामि तं शिरेणहम् बुद्धस्साहस्मिदासीव बुद्धो मे सामिकिस्सरो बुद्धस्साहन्यादेमि शरीरं जीवितं चिदन् वन्दन्ति हञ्चरस्सामि बुद्धस्यैव सुबोधितन् नत्ति मे शरणन् अन्यन् बुद्धो मे शरणन् वरन् एतेन सच्च वचेन वड्डेयन् सत्तु शासने बुद्धन् मे वन्दमानाय यन् पुण्यन् पशुतन् इध सब्बेऽपि अन्तरायामि माहेशुन्तस्य तेजसा कायेन वाचैव चेतसा व बुद्धे कुकुम्मन् पकतन्मयायन् बुद्धो पटिगणहातु अचयन्तन् कालान्तरे संवरितु बुद्धि धम्मानुसति हन्दमयन् धम्मानुसतिनयन् करोमसे स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको एहिपस्सिको ओपनयिको पच्चतन् वेदितव्यो विन्युहीति हन्दमयन् धम्माभिगतिन् करोमसे स्वाखातदादिगुणयोगवसेन सेयो योमकपाकमपर्यत्ति विमुखभेदो धम्मो कुलोकपतना तदधारिधारी वन्दामहं तमहरन् वरधम्ममेतन् धम्मो यो सबपाणिनन् शरणन् खेममुत्तमन् द्वितीयानुसतिष्ठानन् वन्दामि तं शिरेणहम् धम्मस्साहस्मिदासीव धम्मो मे सामिकिस्सरो धम्मस्साहन्यादेमि शरीरं जीवितं चिदन् वन्दन्ति हञ्चरस्सामि धम्मस्यैव सुधम्मतन् नत्ति मे शरणन् अन्यन् धम्मो मे शरणन् वरन् एतेन सच्च वचेन वड्डेयन् सत्तु शासने
धम्मन्मे वन्दमानाय यन् पुण्यन् वसुतन् इध सब्बेऽपि अन्तरायामि माहे सुन्तस्य तेजसा कायेन वाचा एव चेतसा व धम्मे कुकुम्मन् पकतन्मयायन् धम्मोपटिगणहातु अचयन्तन् कालान्तरे संवरितो वधम्मे संघानुसति हन्दमयन् संघानुसति नयन् करोमसि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुक्कला एस भगवतो सावक संघो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणेयो अनुत्तरन् पुण्यखेतन् लोकसति हन्दमयन् संघाभिगतिन् करोमसि सधम्मजो सुपटिपत्तिगुणादियुक्तो यो अट्ठविदो अर्यपुक्कलसङ्घसेठो शीलादिधम्मपवरासय कायचित्तो वन्दामहं तम अर्यान् गणन् सुशुद्धन् संघो यो सबपाणिनन् शरणन् खेममुत्तमन् ततीयानुसतिष्ठानन् वन्दामि तन् शिरेनहन् संघस्साहस्मिदासीव संघो मे सामिकिस्सरो संघस्साहन्नियादेमि शरीरं जीवितं चिदन् वन्दन्ति हञ्चरिष्यामि संघस्सोपटिपन्नतन् नत्थि मे शरणन् अन्यन् संघो मे शरणन् वरन् एतेन सच्च वज्रेण वट्टेयन् सत्तु शासने संघन् मे वन्दमानाय यन् पुण्यन् वसुतन् इध सब्बेऽपि अन्तरायामि माहे सुन्तस्य तेजसा कायेन वाचा एव चेतसा व संघे कुकुम्मन् पकतन्मयायन् संघोपटिगणहातु अचयन्तन् कालान्तरे संवरितो वसंघे। एक छोटा सा रिफ्लेक्शन करेंगे। बार बार अनुस्मरणीय 5 विषय। हन्दमयन् अभिन्न पच्चवेखन पाठन भणामसि आए हम बार बार विवेचन योग्य पाठ करें। जरा धम्मो में ही जरन अनतीतो मैं जरा धर्मा हूँ, मैंने जरा को पराजित नहीं किया है। व्याधि धम्मो में ही व्याधिन अनतीतो मैं व्याधि धर्मा हूँ, मैंने व्याधि को पराजित नहीं किया है। मरण धम्मो में मरणन अनतीतो मैं मरण धर्मा हूँ, मैंने मृत्यु को पराजित नहीं किया है। सब पे ही में पिए ही मना पे ही नाना भावो विना भावो सभी मेरे प्रिय मुझे प्रसन्नता देने वाले मुझसे दूर हो जाएंगे, बिछुड़ जाएंगे। कम्मस्य कोमिहि कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पटिसरणो यन कम्मन करसामि कल्याणन वा पापकन वा
तत्सदायादो भविष्यामि। मैं अपने कर्मों की स्वामी हूँ, कर्मों की उत्तराधिकारी हूँ। कर्म ही मेरी योनि है, कर्म ही मेरा बंधु है, कर्म ही मेरी शरण है। मैं जो भी कर्म करूंगी, कल्याणकारी या पापकारी, उसकी उत्तराधिकारी बनूंगी। एवं अम्मे ही अभिन्नन पच्च वेखी तब्बन। इस प्रकार हमें बार बार विवेचन करना चाहिए। ओवर टू यू निखिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी। आगे के लिए सर से प्रार्थना करूंगा कि हमें निर्देश दें। की तरह हम शुरू करते हैं। मैं करीब 15-1 मिनट समाधि का अभ्यास करके मन को समाहित कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे।
ये भाई हफ्तों से हम लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से रूप आयतन और शब्द आयतन से संखार जागा है, जागते हैं, और उसके ऊपर हम ऐसे काम करें ताकि उस संस्कार करके शमन हो सके। काफी अभ्यास कर चुके हैं, पहले इंडिविजुअली और फिर कलेक्टिवली, दोनों को इकट्ठा करके। मुझे लगता है अब हम काफी क्लियर हो गए होगा किस तरह से उस पर काम करना चाहिए। तो आज मैंने विचार किया कि हम जो हल्के हल्के संस्कार बनते रहते हैं और जिसकी ओर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा विवेचन कर ले। पिछले वर्ष हमने जो चर्चा की थी उसके ऊपर इतनी हमें याद है। महासतीपट्ठान सुत्त का एक बार कुछ दिनों पहले मैंने चांट भी किया था कि कहाँ कहाँ पे कृष्णा जागती है। उस सूत्र के आधार को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। हो सकता है वो सब हमारे लिए एप्लीकेबल ना हो, पर हमारे किसी जानकार के लिए एप्लीकेबल हो सकती है। इनमें से कुछ चीज़ें हमारे लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं, कुछ इतनी हमारी सटल हैं कि हमारे को प्रकट नहीं हो पाती, लेकिन जब उस पर विचार करते हैं तो समझ में आता है कि थोड़ा थोड़ा तो है। तो इस तरह से जो सूक्ष्म संस्कार हैं, और वही धीरे 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 अगर उनकी ओर ध्यान न दिया जाए, हल्के हैं लेकिन ध्यान नहीं देंगे तो वो गहन बनते चले जा सकते हैं पूरी, और वो भी एक दुख का कारक बन सकते। संक्षेप में कोशिश करेंगे, एक बर्ड्स आई व्यू उसका ले लें। I'll share the screen and then देख पा रहे हैं? जी सर। भगवान ने खुद ही प्रश्न पूछा कि इस लोक किस किस रूप में किस तरह की गणना जाती है, कहाँ पे गणना जाती है, कहाँ पे रुकती है। तो उसका उत्तर वो दे रहे हैं, पूरा डिटेल में दे रहे हैं। जो सामान्यतः हम उस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन क्योंकि हम गहन साधना कर रहे हैं तो मुझे लगा कि शायद इस पर भी थोड़ा समय लगाना अच्छा रहेगा। पहला था जैसे तो चक्षु लोके प्रिय रूपम सात रूपम एति साधना उपजमाना उपजति एतन विश्वमाना निगस्सति। तो जो आँख है इस संसार में, वो उसके प्रति प्रिय भी लगती है, और एक सुखद वेदना होती है उसको देखते, और वहां पे भी तृष्णा जाग सकती है। उस तरह कान के ऊपर भी। तो इससे हम क्या समझते हैं? आँख पे the eye in the world seems nice and pleasant, and it is there that craving arises and settles. What do we really convey to us? Would somebody like to share? हमने चर्चा की थी पिछले साल, लेकिन काफी समय हो गया, शायद याद ना हो। लेकिन just by reading the words, can we figure out what exactly is being said? प्रैक्टिकली कहाँ है इसका, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है इस बात? मीनिंग तो सर ऑब्वियस ही लग रहा है कि आंख से जो दिख रहा है वो, अगर वो आपको प्लेजेंट लगता है तो आप उस पे आँख से जो दिख रहा है नहीं कहा जा रहा। आँख, चक्षु, चक्षु की बात, सॉरी eye by itself, yeah. Eye by itself. It sounds strange. क्या कह रहे हैं? चक्षु विज्ञान। No, it's not चक्षु विज्ञान.
मतलब चक्षु विज्ञान जो है उसकी वजह चक्षु से मैं विज्ञान देख की पा रहा बात हूँ। नहीं है। वो कह रहे हैं ना, चक्षु नहीं, मतलब वो तो चक्षु मन में विज्ञान, हो रहा है ना कि वहां पर मन चक्षु में विज्ञान की कहाँ मेरी बात। मेरी संज्ञा से, मेरी लिसन संज्ञा लिसन, की वजह बस से। आप गलत डायरेक्शन जा रहे हैं ना, इसलिए मैं रोक रहा हूँ। शब्द क्या लिखा है? आई इन द वर्ल्ड, आई, नॉट आई विज्ञान, नॉट हस्त, नॉट सीइंग, नॉट द ऑब्जेक्ट, द आई। ये जो आंख है, ये नाइस कैसे लगती है और प्लेजेंट लग सकती है? ओह, आंख के प्रति कैसे क्रेविंग जाग जाएगी? दैट इज अ पॉइंट बीइंग मेड। आपने बताया था एक बार कि अगर हमारी आंख में कुछ हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो ऑब्वियसली you feel something is missing now from life, and when it is there, it looks good, it looks pleasant, that yes, I can see the world nicely. एबिलिटी टू सी, आई बिलीव, जो कह रहे थे। वो मना करेंगे। एबिलिटी टू सी तो नीचे आएगी, चक्षु विज्ञान तो बहुत नीचे आएगा। हाँ, ये तो सिर्फ ये आंख को कह रहे हैं, हाँ, जो हमारा सिर्फ आंख। इंस्ट्रूमेंट है, या ये जो आंख दिखती आँख है है, उसको, हाँ, हाँ, इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, इसके ऊपर मैंने चश्मा लगाया हुआ है, जी जी। वो जो उसके अंदर है, वो किसी नाइस और प्लेजेंट लगती है क्या? हाँ सर, ऐसा या सर बोलो ना। आंखें तो अच्छी लगती है ना हम्म, सबको, जो और एज अ पार्ट, इट्स अ रूप, इट्स अ फॉर्म ऑफ या रूप, आई या या एंड या it some may someone like नीली आंखें होनी चाहिए, ब्राउन आईज होनी चाहिए, ऐसे ऐसे, नहीं नहीं नहीं, नहीं आंखें अपने आप में तो अपने कोई हमने में, लक्षण आई मीन अगर, हाँ, I mean, देख, आई मीन दैट्स आंखें हाउ, अपने ये पूनम, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, डोंट गेट या वरीड, या 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 ओके, डोंट गेट वरीड। अच्छा, आंखें तो शायद कुछ नहीं करती, अपने में कुछ अरे नहीं है। यार, वो बात नहीं हो रही। क्या सर, बात हो रही है? आप देखो तो सही क्या कहा जा रहा है। सर कुछ लोगों की आंखें हमें सुंदर लगती हैं, जिन्हें हम पसंद Yes. करते हैं, तो आई थिंक ये बोला जा रहा है, इफ आई एम राइट। Yes. तो वो वही That's- राग जगाता है हमारे वो अट्रैक्शन देता है, या जैसे बच्चों की आंखें कई बार बहुत सुंदर लगती हैं हमें। This concept became absolutely transparent and clear to me जब मैं कोरिया गया था कुछ दिनों के लिए अपने बेटे के साथ रहने। When our granddaughter was born, the first comment of the nurses and the doctors was, कितनी बड़ी आंखें हैं, how beautiful. They didn't focus on anything. क्योंकि आंखें बड़ी अच्छी। Why? उनकी बहुत छोटी आंखें होती है ना कोरियन। क्योंकि उनकी आंखें बहुत छोटी हैं। हाँ, And there's a whole series of cosmetic surgery of eye which they do, those who can afford. There's a whole मतलब दुकान लगी हुई है वहाँ पे, कॉस्मेटिक सर्जरी आँख की करा लो, बड़ी कर लो, उससे दिक्कत भी होती है, प्रॉब्लम भी, बट दे वांट टू इंक्रीज इट इन साइज। क्यों? बड़ी आँख अच्छी लगती है, छोटी आँख अच्छी नहीं लगती। ऐसा नहीं कि उसमें दिख नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही, अट्रैक्शन टू द आई। कान में क्या अट्रैक्शन होता है? सिमिलरली टुवर्ड द ईयर, कैसे उसमें? आँख, कान किसी का टेढ़ा हो गया है, डिफॉर्म्ड है, बहुत बड़ा है, छोटा है, there's a whole rate of cosmetic surgery of the eye, ear, nose, everything. नोज का तो है। Teeth, lips. See, this is a place where it is being pointed out. We may not get noted with respect to ourselves. So as Poonam ji was saying, it is a detail of the root that we are talking about. Yes, this is, yeah, we are talking of the root. Yeah. Yeah, eye and the root, the natural root. नोज का भी ऑपरेशन होता है, ये भी बहुत क्लियर है। Eye and ear. So मतलब since we are talking of that, you can see that the attraction and craving can arise with respect to the each sense organ. Yeah, even tongue also. Yeah, you are right. So at least some things are quite obvious. The skin, you can see how much
kaya lokui. So that's the point being made now. It is a very, you may say, हमें तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है. Maybe because we are not at this stage being given, but you ask a film actor and actress, matters enormously for them. How their eyes are shaped properly, nose shaped properly. Here, where have you got caught? Where we can get caught? So that's the power of Buddha, who can point out कि यहाँ भी पकड़े जा सकते हो. माइंड का कैसे? We'll take mind later when I come to that, because otherwise we'll get trapped here only. That Chakku Loki, how should it be translated? In the realm of eyes, दो meaning है. In the realm of eyes or eyes in the world, which is basically the same. Eyes का जो realm है, आँखों का realm, मतलब कितनी नाना प्रकार की आँखें हैं इस संसार में. सर मगर ये सिर्फ आईज और ईयर्स को क्यों किया? ये तो फिजिकल तो सारा ही बॉडी का है, मोटे पतले, मैंने वो तो कुछ भी हो सकता है, फॉर्म में तो कुछ भी हो सकता है. Some people want to be thin, some people want to be thin. Nothing has been left out. Nothing has been left out. हम इस समय आई और ईयर कर रहे हैं क्योंकि हम ये दो को ही डिस्कस कर रहे हैं, and I am leaving it for you to extrapolate it every. Buddha is not leaving out of these things. सोतम लोके, घानम लोके, जिह्वा लोके, कायो लोके, मनो लोके. Everything. अच्छा. काया के ऊपर तो पूछो नहीं क्या क्या हो रहा है. So he's considering everything, but क्योंकि हम दो को हमने काफी गहराई से अभ्यास किया, तो मैं उन्हीं दो पे फोकस कर रहा हूँ ताकि we don't get lost in the detail. Then we can do it ourselves. तो टंग का कैसे होगा? जीव का कैसे होगा? You think about it. I'm sure you're capable of it. बाकी सब आउटसाइड फिजिकल समझ में आता है, टंग का समझ में नहीं आया कि वो कैसे कोई. Yeah, you can Google it up, cosmetic surgery of tongue, and you'll find out. टंग की भी होती है? आप देख लेना, अगर होती हुई तो पता चल जाएगी. सर्जरी ऑफ द टंग फॉर वेरियस रीजंस. I'm just extrapolating. I've not seen it myself. I've not done the exploration. I'm just on the basis of whatever I have checked up. I find it must also be there. Could it be the fact that there are people with very refined tastes, and people appreciate that refined taste, that special people who, there are various kinds of issues really. The taste buds, if they're not working properly, then that can be related to the vinyan rather than to eye and tongue. But the tongue by itself may have the issues. कईयों की टांगे जिह्वा जो है कटी हुई होती है, that is repaired, वो अच्छी नहीं लगती. And somebody's tongue is oozing out, then the surgery is done to take it in. The congenital defects which are there. पियर्स भी तो करते हैं, टंग को पियर्स करते हैं लोग खुद. Yeah, that is for that itself is, that also is a craving है ना एक तरह की. Put it, उसमें वो डालते हैं कुछ golden rings are डालते हैं. So you can have all kinds of things. बट सर टंग का तो फंक्शनैलिटी ठीक कर रहे हैं ना, उससे काम नहीं हो पा रहा इसलिए उसको रिपेयर कर रहे हैं. बट वो बाकी सब तो क्रेविंग पे कर रहे हो आप. व्हाट यू थिंक इज अ परफेक्ट आई शेप, व्हाट इज अ परफेक्ट नोज शेप? We don't know, and I will request you to find out. Let's not spend too much time on it. And there is a lot of written. I request you to find out and advise me tomorrow. Okay, you can keep it there. You can check it up and see. Maybe it's not. Maybe the issue which Buddha pointed out may not be applicable today. No difficulty in admitting it, but the possibility is there. You can check it up and see.
Okay, then so we see these are the sense organs. Then they are objects. उनके objects के बारे में तो quite obvious है. You know? Now you must see that here it is Rupa Loke, Saddha Loke, sights and sounds. Now they seem nice and endearing and pleasant. Now what does it mean? Because आगे जाके वो रूप संपස්සजा लोके भी कह रहे हैं. चक्षु संपස්සजा लोके, then he's also talking of चक्षु संपස්සजा वेदना लोके, सोच संपස්සजा वेदना लोके, feeling born of ear contact, feeling born of eye contact. How do you distinguish this from this? Sights and sounds in the world seem nice and pleasant. Sights seem nice, we are told, because we see them and they cause feeling. Sounds seem nice because we hear them and they cause a pleasant feeling. What does this mean really? How is it different from the feeling arising on interaction of the eye and the object? How could it be different? In what way? Can you visualize? तो ये सारा शरीर का लोक है ना, तो जो जो हमने पहले पढ़ा था कि फीलिंग तो अच्छी और बुरी वाले की कैटेगरी में फॉल कर जाएगी, लेकिन जब जब हम स्वस्थ होगा तो वो हमारे या तो धातु के रूप में दिखेगा या बॉडीली जैसे हम देखते हैं. That's how. सर ये विज्ञान और वो वेदना की बात हो रही है यहाँ पे. विज्ञान यहाँ पे let's see the whole thing. Confused है. Okay, मैं just see. यहाँ पे रूप और शब्द की बात. आगे रूप is the object of chakshu, शब्द is the object of soul. Then there is chakhu vinyana, then there is sota vinyana, then there is chakhu sampasta, sota sampasta, sota sampasta. Then there is chakhu sampasta vedana, sota sampasta vedana. And then there is रूप संज्ञा, शब्द संज्ञा का संज्ञा को तो हम अलग रख सकते हैं. तो इसमें फर्क क्या है? अलग अलग क्यों कर दिया इसको? What could be the difference between the sights in the world seem nice, the eye consciousness in the world seems nice, eye contact in the world seems nice, feeling born of eye contact in the world seems nice. They all seem to be same, isn't it? इसमें फर्क क्या है? फर्स्ट प्राइमरी फेसी तो लगता है एक ही चीज है. इसमें क्या क्यों उसको 5 बार लिख के बुलवा रहे हैं और अलग अलग करके कह रहे हैं? That's why I'm saying these are the subtler aspects of the teaching we can explore. I mean, it is for us to explore. There's no kind of fixed way of interpreting them, because Buddha has not given any detailed explorations. What could it mean? If I see, when I'm saying sights in the world seem nice and pleasant, it is quite clear that sight is because of eye consciousness and nice is because of feeling. So what is, why is he putting these separately? I don't know. That I can't understand. But ये इतना समझ आ रहा है कि ये बात है. वो तो हमें क्लियर हो गया है. Nicely, we're clear about what is happening. We're clear that how do we see. Seeing, the very process of seeing is chakhu vinyana. Process of hearing is shruta vinyana. Yes, we know that. That's clear. And because of that, when then the interaction happens, then there is phassa. Yes. Phassa is also separated out. Yeah. How is it separated out? So, and then there is feeling. So why is it that there are all these aspects of
dependent origination or cause effect have been separated out individually and not collectively taken as one, which is what our normal experience is. सर कहीं ये फॉर्म विज्ञान वेदना सबका ब्रेकडाउन तो नहीं है ज्यादा सटल उस पे? Yeah, but how do we think? वो तो बात है, obviously break काट के रखा हुआ अलग अलग कर, लेकिन ये कहना कि साइट्स इन द वर्ल्ड या रूप जो है संसार में हमको प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, फिर कहना कि देखना उसको अच्छा लगता है, फिर कहना कि रूप का स्पर्श अच्छा लगता है, फिर कहना कि रूप के आधार पे जो वेदना जाती है वो अच्छी लगती है, तो हम तो यही मानते हैं कि वेदना अच्छी लगती है, वो इसीलिए रूप अच्छा लगता है। तो इनको अलग अलग करने का क्या तात्पर्य हो सकता है? क्या पता तन्हा कहीं पे भी उठती हो इसलिए डिफरेंट लेवल सटल 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 उठती जा रही है, तो वो कंबाइन करके बहुत स्ट्रांग हो जाती है जब तक वहां पहुंचती है, तो वो सटल लेयरिंग लेयरिंग तक भी हम देख पाए कि अच्छा यहाँ पे भी एक लेयर हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, और वेदना तक बहुत ही स्ट्रांग हो जाती हो। अब पता नहीं अब क्या वो है, बट धम्म विचय टुकड़े टुकड़े करना सब हमारे को संसार में तोड़ तोड़ के देखना। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे को राग कहाँ पे जागता है, अच्छा कहाँ लगता है? अच्छा वेदना लगती है कि शब्द अच्छे लगते हैं, कि शब्द का स्पर्श अच्छा लगता है, कि देखने की शक्ति अच्छी लगती है, या सारे ही अलग-अलग अच्छे लगते हैं? अच्छा या बुरा तो हमारे मन वो में तो है ना। परसेप्शन जो से प्रिय वो लग होता रहा है। है ना, हम तो प्रिय की बात कर रहे हैं, ठीक है? सर पहले प्रिय रूपम सात रूपम, प्रिय अगर रूपम मान लीजिए सात मेरे रूपम। मेरे मेरे को चक्षु है और मेरे कॉन्शियस ही नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं है उसकी, तो मैं क्या करूंगा, कैसे देखूंगा? दिखाई तो देगा। ये थोड़ा कह रहे हैं कि क्या करोगे खुद तो नहीं कह रहे हैं उसमें अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, आंखें वीक होती जा रही हैं, तो ऐसी तैसी हो जाती है, हाँ तो देखने के प्रति भी अट्रैक्शन, सिर्फ क्या देखा उसके प्रति अट्रैक्शन नहीं है, सिर्फ आंख के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, आंख के प्रति एक तरह का अट्रैक्शन है, जो देखा उसके प्रति दूसरी तरह का क्रेविंग है, और देखने की शक्ति के प्रति भी क्रेविंग है, कि वो कम हो जाती है तो आसमान टूट पड़ता है, डॉक्टरों के हाँ पास दौड़े जा रहे हैं। बट ये सब That is सच the है सर। so you can सब see the difference. हाँ Locate the difference. तो सर ये पहला वाला तो आपका जो आपका ये आंख हो गया, ये दिस इज वो, और एक साइट हो Object. गया जो देखा आपने बाहर, वो भी एक ऑब्जेक्ट है, वो भी एक ठीक है? ऑब्जेक्ट हुआ, और फिर आई कॉन्शियस जो इनके कैपेबिलिटी, से जो हुआ, फैकल्टी वो तो ठीक है, that लेकिन is- हाँ जी, वो एबिलिटी भी इम्परमानेंट है, like everything else. This that also is also impermanent, and when it changes, हमें नॉर्मली हमको महसूस नहीं होता कि हमारे को देखने के प्रति राग है ना? हमें नहीं महसूस होता, वो तब महसूस होता है जब देखने की क्षमता क्षीण हो जाती है, जब कैटरेक्ट हो जाता है, जब आंख चश्मे लगते हैं और दिखता नहीं है, तब सर पता चलता यहाँ है कि पर देखने के प्रति कमजोरी भी की राग। बात कर रहे हैं ना सर, व्हेन वी कैन सी इट एंड सडनली हमारी नजर कमजोर हो जाती है, तो देयर इज अ क्रेविंग दैट आई एम नॉट एबल टू सी, राइट? वो दैट इज व्हाट इज, आई जस्ट जॉइन जस्ट नाउ ओनली, आई एम नॉट श्योर इफ आई एम राइट, कि जैसे कि सुनने की क्षमता कम हो जाती है तो वी आर नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली, तो उस पर भी क्रेविंग शुरू हो जाती है कि नाउ आई एम नॉट एबल टू सी प्रॉपरली क्योंकि मेरी नजर कमजोर हो गई है, और नाउ आई एम नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली क्योंकि मेरी सुनने की क्षमता कम हो गई है. इज दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? Yeah, when we're talking about these consciousness, that is what it means. And the craving is already there to see. Only thing is, because that seeing ability remains apparently unchanged for a long time, we take it for granted. So we don't think मुझे देखने की craving है या सुनने की craving है. We don't think in that terms at all, Yeah. because it doesn't become manifest. Yeah, when it doesn't work, that is the time we are able to. Then we realize, अरे Yes. देखने की भी बहुत craving थी यार. इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। और जस्ट एक मिनट, लेट मी कंप्लीट है। जब कोरोना हुआ और हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, तो कितनी तड़पड़ाहट हो रही थी
क्यों? तब तक एबिलिटी भी नहीं खत्म गई थी हमारी, सुनने की, देखने की। नहीं, देखना था अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, इनको, उनको, संसार को। So the same thing you had mentioned for smell and taste also during Yeah, COVID it's time, like everything. yeah. It operates for everything. So there is a difference. Therefore, what I am trying to point out is there is a difference. Difference in ऑब्जेक्ट्स के प्रति प्रेम होना, कॉन्शियसनेस के प्रति प्रेम होना, और स्पर्श के प्रति प्रेम होना, कांटेक्ट के प्रति होना। आंखें भी ठीक थी, ऑब्जेक्ट भी अवेलेबल थे, लेकिन स्पर्श नहीं हो पा रहा, तो भी दिक्कत हुई। When we were in lockdown, how much of difficulty it created at the mind level, because the world which we assume to be nice and pleasant, we are not able to see it, we are not able to hear it, we are not able to smell it, taste it, and so on. So there's a difference. The point is, what we are discussing is, there's a difference in the attraction towards feeling, craving for feeling, craving for contact, craving for the consciousness, the sense consciousness, and the craving for the eye or the ear. There are different kinds. Normally, we don't think in those terms. We don't bother about them. It's only when because it is somehow which is not impaired, हमको मालूम ही नहीं पड़ता. But when it is constrained, then we realize the whole problem. So we can be mindful of it. We don't have to do anything. We can be mindful of it. Oh, this also is there. And when this is understood and remembered, then the suffering will not happen. When this shows its character. When the things change, suffering will not happen. We'll be able to accept the change. And then we come to perceptions. And of course, perceptions we have already discussed many times. Not only do we यही ठीक है, ये इस तरह का म्यूजिक अच्छा होता है, कोई दूसरा कहते नहीं ये अच्छा नहीं होता, ये अच्छा होता है, तो अच्छी खासी आर्गुमेंट हो जाएगी, क्योंकि मेरा परसेप्शन ये है और आई हैव अ क्रेविंग फॉर दैट. So perception of sight, sound, smell, it seems nice and there is a craving arises there. मेरा विचारधारा, इस मेरे जो धारणा है इस ऑब्जेक्ट के प्रति, वो ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई म्यूजिक हो, different kinds of music हो, classical music, the usual day-to-day music, and you can see how much distinction it creates, how much of craving we have for our perception. And then we go ahead, when the perception and interaction in the world results in intention towards various sense objects. Our intention, which we have, is nice. We're attached to that. And what is most interesting is, craving for sights in the world seems nice and pleasant, and it is there that the craving arises, which means we take delight in our craving also. There's something very subtle we can think about it. सर इंटेंशन का क्या वो हुआ, उसे थोड़ा समझा दीजिए. इंटेंशन का इसका क्या मतलब हुआ? इंटेंशन इस ऑब्जेक्ट के प्रति मेरा क्या, इसको देखते मेरे मन में किस तरह का इंटेंशन जागता है. इस पॉलिटिशियन को देखता हूँ तो मेरे मन में जागता है कि इसको तो सुना दूं कुछ. दूसरे को देखता हूँ तो मेरे मन में जागता है नहीं ये तो बहुत अच्छा आदमी. It could be politician, it could be a family member, it could be an object, anything. तो सर ये जो इंटेंशन है
इसमें क्या विज्ञान का भी एलिमेंट शामिल है? एलिमेंट शामिल नहीं है। It मतलब arises विज्ञान as a result of all that. But it is an independent factor. जो क्योंकि प्रोसेस है वो तो चेतना वही है और ना। संज्ञा तो अलग मतलब अगर ऐसे देखो तो बहुत अलग से दिखती है, लेकिन इंटेंशन संचेतना जो उपस्थित संचेतना जो बात है, और जो Intention is coloring is a universal factor which is always present. मैं कई बार निवेदन कर चुका हूँ. Intention is always present. Like Sangya is always present. Only thing is we may or may not be able to recognize. Intention can be the very fact that I want to see something is an intention to seeing arrival. Then only I turn my attention and look at it and do, and everything else happens. And then, depending on how the seeing process affects the mind, intention becomes wholesome or unwholesome. मैं उसको किसी को देख के और मैं वो प्रोसेस साइमल्टेनियस हो रही है, तो जैसे ही उसके प्रति मेरा प्रोसेसिंग शुरू हुई, the intention gets colored by craving or aversion or whatever. So the intention here obviously refers to that. हर एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के प्रति मेरी क्या धारणा बनती है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये म्यूजिक, माय नेक्स्ट वो क्वेश्चन परसेप्शन हो ना, और उसके प्रति मैं किस तरह से रिएक्ट करूंगा, उस तरह से उस एक तो हुआ परसेप्शन, फिर वो उसके प्रति उस परसेप्शन से क्या इंटेंशन ड्रिवन है। एक इंटेंशन हो सकता है छोड़ो यार ठीक है, परसेप्शन इज नॉट हेल्ड वेरी टाइटली, देन ठीक है, वो गलत, वो उसका परसेप्शन अलग है, मेरा परसेप्शन अलग है, आई डोंट रिएक्ट टू इट, ठीक है, जाने दो। But it could be very strong reaction can also happen. They can result in, as we know, when you get into arguments about some things which are very, about which we have strong perceptions, you can get into very strong reactions can arise. And they are essentially the dynamic part of the mental factor of craving. Craving or intention are साथ साथ ही है. Craving is a mental factor whose dynamic aspect is the intention which results in activity. सर एक सेकेंड, And सॉरी, let me explain again. हाँ नहीं मैं समझ गया संस्कार तो को मैं रिलेट एक्चुअली क्या वेद में let me explain the whole process. Let me explain the whole process. मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने और बाहर शोर होता है बहुत जोर से, and that creates an intention in me. Let me go out and see क्या हुआ. And that intention, that's the first thing which happened. And then I go out, open the door and see, यार ये कि कुछ गड़बड़ है क्या? And that whole process of seeing and its consequences will happen. Then all the object will be there, there will be seeing, there will be Vedana, there will be perception about it, there will be Vedana about it, and based on the Vedana, there may be a craving arising, there may be aversion arising, there may be fear arising, and that will manifest in the form of some activity. वहां पे कुछ है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा उसके लिए. भय है, कोई आ गया दरवाजा बंद करो, कोई आग लग रही है तो पानी फेंक के उठा के फेंक दो, कुछ गिर गया है जिससे शोर हो गया तो अच्छा चलो देख लें किसी को कुछ नहीं हुआ, चोट तो नहीं लगी. Then we try to take action so as to repair whatever damage has been done. So now this intention of repair can be done with sati and panya. It can also be associated with craving. So there is a difference, a subtle difference. So the craving is, and it can be either rag or dvesh. Generally craving ko normally rag ke form mein rehte, but reverse is also true. So when you think about
the craving for sights, it means I go to a beach and sit there and enjoy the sight which is there. And I also enjoy the sound which comes out at the beach. There's a craving for the sound, a craving for somebody may like the sound but not like the sight because वहाँ पे बहुत गंदगी फैली हुई वहाँ बंद करके सुनता है बड़ा अच्छा लग रहा है. So there are difference. That's what is what I'm trying to say. There is a difference in these, subtle difference in these, and the more our हमारी जितनी भी सती बढ़ती है, धर्मविचय बढ़ता है, उसके डिफरेंस को देख पाते हैं, तो फिर वो अटकते नहीं है. तो ना उसमें अटके और पता चल जाएगा तो यहाँ पे साउंड तो अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी लग रही है, और भी देख सकते हैं कि हवा बहुत अच्छी लग रही है, तो टच भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन साइट अच्छा नहीं है यार, इतना गंदगी फैला रखी है लोगों ने. So you can distinguish between that and not allow the mind to get carried away by sight and then get angry and lose the fact that there are other things other interactions which are happening which are pleasant. So the distinction between them, between these sensory inputs is of great help. That's the point which I wanted to draw your attention to. That when you distinguish between things, between various elements as Buddha has pointed out, so the degree of subtlety, degree of ability to penetrate into experience becomes very large. Just by knowing, अच्छा भगवान ने ये भी कहा है, इसको समझे तो सही, इसका मतलब क्या हो सकता है, कोई कोशिश कर रहे हैं हम लोग मिलजुल के समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, बिकॉज वी आर श्रद्धा, भगवान जो है is talking sense always. I may or may not understand it, but there is some sense in it. So now when I deeply reflect, I see कुछ फर्क तो है, परसेप्शन में और इंटेंशन में फर्क, इंटेंशन में और क्रेविंग में फर्क है, क्योंकि इंटेंशन कैन बी ड्रिवन बाय सती एंड पन्या आल्सो, नॉट नेसेसरली बाय क्रेविंग. यूजुअली हमारे केस में क्रेविंग से ही डिस्कवर होता है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर. So intention is a dynamic aspect of it, and craving is of the mind. It is the position जो horizon, जो हमारा position है, जो करते हैं कुछ. And craving is the mental factor which arises when interaction in the world happens. And what is interesting is that we can have a craving for craving also. That's very, very interesting to know. कि ये म्यूजिक सुनने की बहुत इच्छा है, क्रेविंग है, बहुत अच्छा लगता है, and there is craving for it. I should get more, I should see more. And you don't think that craving for music is bad. You don't see it as a craving, and you don't see it in the light of Buddha's teaching as a suffering and so on. You think it's very good. Of course, this good music should be listened to. Good food should be eaten. Good mountainous regions we should go. Going on a nice beach is very good. Enjoying the beach sound is very good. So we have the perception of craving as unwholesome is lost. That's a thing that's worth considering. Each one of us. I have also been looking at it. हम कहते हैं craving दुख का कारण है. Do we really put it into? Do we really see कि हर जगह हमको craving दुख का कारण लगती है क्या? That's something for each one of us to really reflect about. तो आप अभी सर कह रहे हैं लास्ट बात कि समझ में नहीं आई. क्रेविंग के एंगल से आप देखिए कि वेदना कहाँ है, क्रेविंग कहाँ जाग रही है. अब ये मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हम ऐसे देखें, मतलब क्रेविंग के हमारे में आस्पेक्ट, अभी तक हम देख रहे थे वेदना, संज्ञा, संस्कार और संस्कार इज क्रेविंग ना. संस्कार का क्या मतलब है?
संस्कार का मतलब है रिएक्शन जो कर रहे हैं. कि मैं, वो संस्कार बोल रहा है और यहाँ पर बोल रहा है संचेतना. हाँ, that's okay. They're different words for the same thing. संस्कार को ही संचेतना कहा गया, जो कि वोल्यूशनल फॉर्मेशन है, जो कि हमारे एक्शन में आती है, और उसका दूसरा जो मेंटल एस्पेक्ट है, which is called craving. That's what I'm saying. ओके, अभी They ठीक है. are conflated. Sir, now that just now you mentioned, I don't know if I heard you properly, like आवाज सुनना या बीच में जाना, you know, just to spend like most of the time, like to cope up as a cope up mechanism. Also, we say, like, you know, it's good to spend some time with nature or be surrounded. So that is not craving. Is that is craving? You have to find out for yourself. I can't answer it. No, because you just mentioned something. Yeah, it can be craving. It may not be. It may be a medicine. It depends. It's not. Nobody else can answer that question. For me, I have to find out the answer myself. If I am ill and doctor says, "यार तुम वहाँ चले जाओ," पुराने जमाने में तो यही होता था, किसी को टीबी हो जाती थी तो कहते हैं पहाड़ों पे जाओ, जरा फ्रेश एयर लो, ठीक हो जाओगे. No, that was a medicine. But somebody has strong craving for it and he doesn't see any harm in it. That is the point being made. Craving for sights in the world seems nice and pleasant. It is there that the craving is settles and arises. So craving के ऊपर craving arises. हाँ, so आपने अभी जैसे I'm sorry, I didn't hear properly. That's why I'm asking. You just mentioned, right, कि आवाज सुनना या, so I don't know whether I'm properly framing the question. तो वो भी एक craving है, is what you're हो trying सकती है, to. या हो सकती है ना, हो सकती है, definitely. तो सारा 5 senses को बंद करके ही रखना पड़ेगा टाइप से. It is, that's the point ना, वो तो हमने पहले चर्चा की थी ना, महासातिपट्ठना सुत्ता हमने सुना था ना, we read it. I think 2 बार पढ़ चुके हैं. He is not said that eyesight should be, आंखें बंद करके रहो, कान बंद कर लो, ऐसा तो नहीं कहा. क्या कहा था निखिल, याद है तुमको? तुमने चैंट किया था तो बताओ क्या कहा था उसको. जी सर, जब उसको जागरा हो तो उसको दृढ़ सती के साथ देखता है और उसमें आसक्त नहीं होता है. कि वो वेदना को महसूस करता है और उसके प्रति उससे आसक्त नहीं होता, उसकी सती बनी रहती है, सती विस्मृत नहीं होती. He remains mindful of the pleasant feeling which is pleasant, and then does not create a craving for it. That's it. So that is what just I'm asking, like, you know, craving के प्रति craving. तो when we are mindful about it, फिर वो craving के प्रति craving नहीं रहता है ना sir. Then अगर mindful होगा तो craving कैसे जागेगी बेटा? नहीं sir, like just now we are talking about normal behavior is driven by craving. When we go to beach and sit there, we are not mindful, are we? How many of us are mindful about the pleasant feeling arising or the sound feeling arising? Very few. Very few. Okay. That is the point. Right. So we're not talking of theory. This is practice. Yeah, of course, we have studied theory and that tells us what should be done. This is what is saying, this is what really happens. Craving arises. So in the domain of craving, this is what happens. And so many points where craving arise. And this one, the one which seems very strange in the first place is there is craving for craving. So that is, I'm not able to understand that craving for craving. It means that we don't see craving as unwholesome. As for because we are meditators, I will put it in that language, that we don't see that this craving is unwholesome. And I long for going to the sea beach every time. There's a longing for going to the sea beach and enjoying the craving which arises there. That's it. Okay.
That's the meaning. That's how I see it. Okay. Thank you. Does it make sense? Yes, sir. But ये हमेशा ही we don't long for it case to case, whatever it is. Yeah, that's all right. I'm yes, not saying it is a yes. general truth. Yeah, It is generally okay. true for everybody. It is true for majority. That's it. And of course, majority of the people were not aware of the Buddha's teachings, who don't follow the practice, who don't do it properly. Obviously, there is a possibility. These are all possibilities. They are not that everybody is going through them. This is saying कहाँ पे जाग सकती है, यहाँ पे जाग सकती है. तो क्रेविंग के प्रति भी क्रेविंग जाग सकती है, और हम देखते हैं कि जागती है, कोई शक नहीं. सर ये जो पूरा चार्ट जो आपने दिखाया, ये तो सारा बिकॉज ऑफ परसेप्शन चीजें जनरेट हो रही हैं. तो परसेप्शन इतना लो क्यों है उसमें? इसको थोड़ा ऊपर पे नहीं आना चाहिए? बिकॉज what is triggering it? We are not, it's not a question of being low or high. Each one of them is equally important. But वो one after माने this causes that जैसे है, तो वो It's not there. यहाँ पे वो नहीं कहा जा रहा. Please, यहाँ पे कहीं ये नहीं कहा जा रहा this causes that. Nowhere. इस माने in a sense कि perception से, intention से, craving से, ऐसा एक माने वो एक. This is the sequence which Buddha always talks of. In the जो sequence है, भगवान हमेशा usually इसी sequence में बात करते हैं. बट यहाँ पे पतिच्च समुत्पाद की चर्चा नहीं हो रही, वो तो हम कर रहे हैं. वो नहीं, मैं वैसे बोल रही हूँ कि जब वो जनरेट माने नॉट जनरेट माने वो शुरू वहां से हो रहा है, तो वो इतना लोअर उस पे क्यों है? Low high तुमने that being low or high is your perception. It's not low or high. They are all, each of them is important. चक्षु ज्ञान नहीं होगा तो परसेप्शन क्या कर लेगा? रूप नहीं होगा तो परसेप्शन किसका परसेप्शन होगा? So how can you say that perception is more important than रूप? नहीं सर, जैसे मेरी आईसाइट की तरफ जो अटैचमेंट है, वो क्योंकि मेरा परसेप्शन है कि आईसाइट जरूरी है, वो वहां से शुरू हुआ ना. वहां पे जो परसेप्शन नहीं वो यहाँ पे जो परसेप्शन की बात हो रही है, it is perception about objects, not about eyesight. Please see that clearly. ऊपर पे जो डिफरेंट जो है रूप संज्ञालोके, that's it. शब्द संज्ञालोके. He's not saying विज्ञान संज्ञालोके. He's not saying that. We talk of perception about things. ये रूप मुझे अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो ये जो परसेप्शन ऑफ साउंड, परसेप्शन ऑफ स्मेल, ये जो बात हो रही है यहाँ पे, ये किसकी बात हो रही है? ये दिस इज ऑफ द साउंड. मुझे ये इस तरह का म्यूजिक अच्छा लगता है, ये म्यूजिक अच्छा होता है, अच्छा लगता है नहीं, ये म्यूजिक अच्छा होता है. क्लासिकल म्यूजिक बहुत बढ़िया है, और जो दूसरा म्यूजिक है ये तो गंवारों की बातें हैं. That is the perception. Perception of sights. अच्छा, not perception of sound. Perception of sight. मतलब ये जो मूर्ति है ये बहुत अच्छी है, और जो ये वाली है ये बिल्कुल बकवास है. There was a time in our country when there used to be fights between Shaivites and Vaishnavites. उनका परसेप्शन था शिव जी, किसी का परसेप्शन है ये अच्छे हैं, किसी का परसेप्शन है विष्णु अच्छे, वो सुपीरियर है, ये सुपीरियर है. एंड इन साउथ इंडिया आई एम टोल्ड इट्स स्टिल एग्जिस्टिंग दैट काइंड ऑफ hiatus between the two traditions. That's his perception. वो मूर्ति कुछ नहीं कहती, ना शिव जी की मूर्ति कुछ कहती है, ना विष्णु जी की मूर्ति कुछ कहती है, वो तो परसेप्शन उस फॉर्म के प्रति, इस फॉर्म के प्रति. एंड यू कैन हैव, आई एम टोल्ड इन द एंशिएंट टाइम दे यूज्ड टू हैव wars with fights, quarrels, physical violence.
That is perception. Perception of taste. यही खाना अच्छा है, ये खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि मुझे टेस्टी लगता है. पपीता अच्छा होता है, दूसरा कहता है नहीं सेब अच्छा होता है, सेब का टेस्ट अच्छा है, पपीते का अच्छा नहीं है. That is perception of taste. And one can have strong attachment to that. And you can be convinced. खासतौर पर जो नेचुरोपैथी में जब मैं था इन्वॉल्व, तो आई हैड स्ट्रॉन्ग परसेप्शन कि यही भोजन अच्छा होता है, यही खाना चाहिए. और जो ये वाला भोजन नहीं कर रहे, वो लोग बेचारे बिल्कुल गए गुजरे लोग. I had a strong perception for almost a decade. So that perception seemed to be very good, very nice, and I have a right perception. That is important. And we can see how much it can create trouble. बट अपना परसेप्शन तो हर एक को हमेशा सही लगता है ना. वही बात हो रही है ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं अन्यानित्या अन्यानत्ता सर्वे संखारा दुख, ये सब बातें भूल गए ना. नहीं मैं वैसे बोल रही हूँ परसेप्शन का जो नहीं, yeah, we are talking of meditators, you know, talking about people who are not exposed to teachings of Buddha. उनके बारे में क्या बात करनी है हमको? We don't have to put them down or anything. We ourselves are in the same boat virtually. That is the point. Meditators as meditators also, हमको भी यही लगता है ना कि जो हम क्यों लगता है? क्योंकि हमारी प्रज्ञा डेवलप नहीं हुई है. हम चैंट करते हैं सर्वे संखारा अनिच्चाति, सर्वे संखारा दुक्खाति. So we forget that sankhara here, the word sankhara in that case means conditioned things. It doesn't mean only the sankhara khanda. It means everything which is conditioned. That's उसका translation ऐसा किया जाता है. है ना? So that's the key learning we have to keep in mind. अच्छा सर, जैसे ये आपने क्रेविंग फॉर क्रेविंग बोला, तो जैसे मैं एक टाइम पे कोर्सेज को लेके एडिक्टेड थी कि हर चीज का सोल्यूशन यही होता था, एक कोर्स कर लो मेडिटेशन, मैंने उसमें विपश्यना के उसमें, तो वो हुआ कि क्रेविंग फॉर क्रेविंग, मैंने कि that you have to find out now whether it was driven by craving, whether it was driven by perception, isn't it? And it's most likely to be driven by perception. ये आवाज कुछ खराब से हो रही है ना, सब किसी का माइक ऑन है क्या? नहीं पायल जी, आप प्रश्न पूछ के ना ऑफ कर लिया करें, क्योंकि शायद आपका ब्लूटूथ चल रहा होगा, राइट? नहीं स्पीक, ये है हेडफोन है मेरा, नहीं वो मेरा तो हेडफोन है. हाँ, हेडफोन ब्लूटूथ से कनेक्टेड है कि वायर से कनेक्टेड है? वायर से. अच्छा, तो थोड़ा देख लो, कोई बात नहीं, चलो चल जाएगा, चल जाएगा. क्रेविंग एक बार दोबारा समझा दीजिए, ये थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इतना क्लियरली समझ में नहीं कि भाई हमको I'll confine myself to ourselves, to me. I'll not talk about world at large. So let's leave that question. कि मुझे क्रेविंग है, एज एन एग्जाम्पल, पहाड़ों में जाने की. मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं पहाड़ों में जाना चाहता हूँ, और वहां जाके मेरे मन में वहां जाने के प्रति और राग बढ़ता चला जाता है, और मुझे वो अच्छा लगता है. पहाड़ों के प्रति मेरा प्रेम मुझे अच्छा लगता है, पहाड़ों के प्रति मेरी क्रेविंग जो है मुझे अच्छी लगती है, और मैं उसको भी संजो के रखता हूँ. नहीं, अच्छी बात है. एंड देन आई एम रेडी टू फाइट विद यू एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज गुड. The fact that I am not able to see craving by itself is a cause of suffering, isn't it? That is the point which we should learn from that. That craving for sights in this world seems nice and pleasant.
क्रेविंग भी हमको अच्छी लगती है, not only the sights, but the craving for the sights also seems very good, and we want to preserve it. We want to hold on to it. Okay, so it needs some reflection. Okay, शांति से सोचना तो बात बन जाए. ये मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है अभी तक. बहुत complex. It's actually very simple. Anyway, and then last two things are thoughts and vitak or vichar. I think should be obvious. One is thinking about various sensory objects, another is planning about them, investigating them, managing them, and so on. Which means we are not only just thinking about things, but also getting involved in that thinking. That thinking becomes a part of work, takes a lot of time of work, day-to-day life. Why? Because that seems nice and pleasant to us. Okay, so I think we already taken whole of the time. The whole idea of this exercise was कि हम और सजग हों अपने दैनिक जीवन में. सब चीजें these are all valid for our day-to-day life. हम अपने दैनिक जीवन में और सजग हो जाएं. कहाँ पे हमारी तृष्णा जाग सकती है. अगर हम ये भी जान जाएंगे कि यहाँ पे जाग रही है, तो that itself is quite substantial, helpful in containing its growth and making it into a problem. And as our anicca, dukkha, anatta increases, they naturally drop off. जैसे जैसे हमारी त्रिलक्षण की जो इंसाइट है वो डेवलप होती जाती है, these things become very mild. From craving they shift to liking and dislike, and then we can know, I like it. Right. It doesn't create a perturbation in the mind. It's just a feeling, a pleasant mental feeling or an unpleasant mental feeling. So we can move backwards also. By looking at craving strongly and seeing and letting go of it, then the feeling will remain. So we'll move from craving to feeling. Or in other words, we'll not let feelings convert into craving, and we'll just actually following the advice of Mahasatipatthana. देखने में देखना, सुनने में सुनना, that's the meaning of that. तो हमारी साधना सचमुच खूब स्ट्रांग हो जाएगी. इन्हीं भावों के साथ मैंने आपके सामने पेश किया. आप लोगों को अगर कठिनाई हो रही हो तो we can discuss it again, no problem. But just try to reflect upon it for a day or two, and then we can take up, because it's you need independent reflection on your side also. Yes, you know anything urgent? Sir, सर एक सेकेंड. जो सतिपठान के फॉर्मेट में हम पढ़ते हैं कि ये यावदेव ज्ञानमत्तस, जो जिसमें देखा जाता है, जैसे हम बात करते हैं, ये वाली बात इसमें कहाँ पर आएगी? जैसे वो तो that is the ultimate stage of liberation. यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसत्यमत्ताय is the stage of an arhat. But we are also required to see in that. Keep that as a direction. Yeah, of course. That is why Mahasatipatthana Sutta is a good explanation of that. भाई संसार में इंटरेक्ट करोगे, वेदना जागेगी, सती बनाए रखो ताकि वेदना आपकी ताकि आपकी वेदना आपको हवर हावी ना हो और वहीं पे रुक जाए, प्रतिक्रिया ना हो. बार बार अभ्यास करेंगे तो किसी भी प्रकार की वेदना के प्रति कभी भी रिएक्शन नहीं होगा. And then we move towards freedom. Then we can say यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसति. केवल सती है और ज्ञान है, और अनिश्चितो च विहरति. हम किसी चीज से डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. नच किंची लोके उपादीयति. इस संसार में किसी चीज के प्रति उपादान नहीं रह गया. That is the state of a fully liberated person. तो That is the direction. That is the direction which the Buddha has given us. तो जो देखने वाला पार्ट है, जो हमारे माइंड का देखने वाला पार्ट है, वो विज्ञान, उसे कहते हैं विज्ञान.
चक्षु विज्ञान सोच, उसी को देखने का मतलब अनुभव करना। हाँ, देखना मतलब अनुभव करना। जी। तो हम विज्ञान को, विज्ञान स्ट्रांग है, विज्ञान के कारण जो भी अराइज हो रहा है हम उसको अपने से अलग नहीं, ना ही उसको हम ये जानते हैं कि मैं जान रहा हूँ, ना ही हमारे में ये भाव है कि कुछ जाना जा रहा है। इससे जो हमने पढ़ा लास्ट में, अत्तमयता, नॉन आइडेंटिफिकेशन विद एनीथिंग, अत्तमयता ऐसा ही वर्ड बड़ा पावरफुल, which means basically it means we don't identify with anything. I am no longer the sphere, and there is no longer an object to be seen by me. Just the process of seeing is happening. That's all. So we are required to see this as a process rather than This cannot be practiced. To क्यों practice this, we have to remove. तो फिर वो नोइंग वाला पार्ट क्या होता है सर? जैसे जान ने भी बोला था कि जो नोइंग चीज लाइक माइंड का एक पार्ट है जो नो कर रहा है, मतलब इट्स सती है ना, दैट्स, हाँ, तो दैट एक विज्ञान है, एक सती है, तो हमको सती पुष्ट करनी है ना। उसी में कहा गया यावदेव ज्ञान मत्ता है बटी सती मत्ता है, केवल सती रह गई और ज्ञान रह गया, खत्म, और कुछ नहीं बचा, कोई जानने वाला नहीं रहा। आप प्लीज अंडरस्टैंड दी, फाइन, ठीक है, मतलब अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ इट। राइट। अब हम क्या हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जानने वाला नहीं रहा? डिपेंड करता है सर, आई थिंक सो, कभी कभी तो होता होगा ना, आई एम श्योर, क्योंकि ऐसे बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं कर सकते ना, यू कैन प्रैक्टिस इट, यू कैन रिड्यूस रिमूव द रीजंस जिसके कारण ऐसा नहीं होता। वो दैट इज ओनली पॉस्चरिंग। नोइंग तो देखने का अभ्यास है ना सर, वो तो देखने का क्या अभ्यास है? देखा तो अब तुम मुझे देख रही हो, सुन रही हो, तो उसमें तुम्हें अभ्यास करने की जरूरत पड़ रही क्या? नहीं, जैसे मैं अभी ये इस एंगल से, मैं आपने जैसे बताया अभी, आई कांटेक्ट, फीलिंग और वेदना, इस तरह से मैं देखने का प्रयास करती हूँ, तब मेरे उसमें you are able to break it into parts. That is the path. That is the first step in the path to move towards reduction in sankhara. जैसे जैसे राग द्वेष कम होते चले जाएंगे तो मैं का भाव कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे ही संभव होगा। अभी तो मैं का भाव स्ट्रॉन्ग है कि मुझे लगता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ नहीं मैं देख नहीं रहा, देखने में देखा जा रहा है। Yeah, that's a good posturing. You understand the difference between posturing and reality? समझ रही है ना? ये पोस्चरिंग की जा रही है, हाँ, देखने में देखना हो रहा है, मेरी समझ है, समझ में आ रहा है, ये देखना है, देखने वाला मैं नहीं हूँ, and therefore I see it in that manner. It's a very good exercise, but that is not the aim. Aim is not posturing. Aim is it should really happen. हाँ, ये सर एम तो है, लेकिन हम क्वेश्चनिंग से स्टार्ट करते हैं, कौन देख रहा है, जब हम ये बात कर रहे हैं तो also we are same. All those are steps in that direction. Yes, they are steps in that direction. So they are the methods of investigation by which we reduce the sense of self. तो सेंस ऑफ सेल्फ रिड्यूस करने का मेथड है। जब सेंस ऑफ सेल्फ सचमुच में खत्म हो जाएगी तब वो देखने में देखना होगा। ठीक है, राइट, थैंक यू सर। ओके, चलिए काफी हो गया। सर हमें चार्ट मिल सकता है? हाँ जी, ये चार्ट मिल सकता है, और मुझे लगता है कि I individually feel that सतिपट्टन सुत्ता का एक एक जो लाइन है उसको हमें इंडिविजुअली रिफ्लेक्ट करना चाहिए, एक के साथ सबको कंफ्यूजन हो रहा है इसलिए। Yeah, that's okay. I thought I'll just expose you, give some hints at what could be done about each. Why is that Buddha is talking of so many types of cravings which arise, and we can become mindful of them. That's all. The whole idea is to become mindful of them, because we don't reflect in that manner at all. हम ऐसे सोचते ही नहीं है ना। जी जी। So this is a opening for us to reflect in these manners.
इसे शेयर कर दीजिए सर ताकि हम इसको अच्छी तरह से हाँ, Thank you. ये तो सुट्टा उसका है ना, ऋग निकाय 22 DN 22, you can see in Sutta Center, you can see there DN 22 Sutta Center में सर्च करते हैं। ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, पिछले साल का है, उसमें भी है, अगर आपके पास है, पिछले साल मैंने भेजा। बट इट्स बेटर टू लुक एट सुत्ता सेंटर बिकॉज उसमें ट्रांसलेशन मिल जाएगा, कंप्लीट ट्रांसलेशन। कंप्लीट तो नहीं है, बट एटलीस्ट स्टेप्स मिल जाएंगे। थैंक यू। If it has become too heavy, pardon me. नहीं सर, I Oh, sincerely no, believe please. We we should be can grateful to you. slowly, I mean, slowly absorb it. Okay, slowly absorb it. You should reflect upon each one of them as we try to do in this evening. आप अलग से अपने आप करिए, देखिए, फिर अगर कुछ प्रश्न रहता है तो then we can discuss. Then it will be more specific questions pertaining to that. But try your best to resolve them yourself. Because we have discussed these things so many times that I am confident that if you apply yourself, you'll be able to resolve it. Okay? Okay, thank you. So over to you, Nikhil. You can do start. Maybe I'll do the chanting for a Q&A. Yes, sir. Sarve satta sukhiyo sarve sukhino sarve bhadrani passantu ma pinchi papamadana ma pinchi sukamadana ma pinchi dukkhamadana. Arhan Samam Sambuddha Bhagavan Anandaka Avivadi Rakato Nabiyata Dhamma Dhammam Supatipanno Bhagavato Sāvaka Sangho Namah. May we all be able to appreciate the teachings of the Buddha, the depth and subtlety of all of them, and may we all enter the stream of devotion. Thank you, sir. Thank you, Bhagwan. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, sir.